think अजय अभी live है अभी हम लोग. Yeah, we're live. Yeah, we are live now. Apologies for the technical issues here. मतलब not sure how the stream really collapsed in the middle of our tier maker discussion. Apologies for that. Apologies for the inconvenience caused to you guys. But yeah, let's get into it right away, guys. मतलब हम लोग फिर से कुछ intro नहीं करेंगे. We'll get right into it. हमने tier maker से चालू किया था. अजय भाई, if you want, I can also share. हाँ, zoom in कर लो. आपने कर लिया already. No worries over there. तो थोड़ा बस जूम इन कर लो. शिवम वाज गिविंग हिज प्रेडिक्शंस फॉर द अपकमिंग सीजन और उसने ऑब्वियसली पार्मा, पिज़्ज़ा और लेचे को रेलेगेशन में डाला है. शिवम, सॉरी, यू आर कंटिन्यूइंग यार. सो तूने यू आर टॉकिंग अबाउट पार्मा. तेरी रीजनिंग तो दे रहा था कि वो क्यों तेरे लिए वो हो रेलेगेशन. गया. We can move on. अभी next we can go to 14 to 17. हाँ, so 17th. हाँ, 17th पे I'll go with Sassuolo. I think they will just about survive. मतलब 17th 18th पार्मा कर सकती है, सासोलो जा सकते हैं, बट सासोलो ने वो बहुत ज्यादा मुझे इम्प्रेस नहीं किया है, तो दे विल जस्ट सर्वाइव आई थिंक. 16th पे आई गो विद काग्लियारी. आई थिंक काग्लियारी का थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ आएगा इस सीजन, बट द ओनली रीजन आई एम बैकिंग काग्लियारी कि मुझे अभी भी उनके डिफेंस पे ट्रस्ट है. जो दो उनके डिफेंसिव ऑप्शंस है, दे कैन मतलब, एंड इट्स नेवर एन इजी प्लेस टू ट्रस्ट. Yeremina lover. हाँ, तो बेसिकली ही इज डेडिकेटिंग हिज एंटायर बॉडी, मतलब लिटरली नाउ एंटायर बॉडी टू फुटबॉल. Serie A. So it's very ass actually promoting the league as well. So इस वजह से एंड पोटेंशियली अभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आएंगे तो और जोश में खेलेंगे. तो आई होप बस एस तक ही रहे, आगे ना जाए. तो उसके बाद आई थिंक काग्लियारी के बाद आई गो विद उडिनेसे. आई थिंक उडिनेसे को मैं 15th पे रखूंगा, बिकॉज उडिनेसे से आई डोंट गेट, मतलब इट्स अ गुड टीम. ओमार सोले बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रिस्टियनसन ने बहुत अच्छा किया, आर्थुर आटा जो उनका नया बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है उससे काफी इंप्रेस हुआ हूँ. बेसिकली एलियट एंडरसन ऑफ सेरिया फॉर प्रीमियर लीग फैंस, काइंड ऑफ उसी रोल में अभी तक खेलते हैं. सो आई एम एक्चुअली इंप्रेस्ड बाय दो तीन प्लेयर्स, बट एज अ कलेक्टिव यूनिट की तरह कैसे उडिनेसे फंक्शन कर पाएगी नाउ दैट हॉबिन वापस लॉन्च जा चुके हैं, मुझे उस पर अभी थोड़ा सा डाउट है. सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग उडिनेसे देयर. एंड उसके ऊपर मैं ये ऑब्वियसली जेनोआ को रखूंगा उडिनेसे के पहले 14th पे. So this will be because Genoa proper. Wow. बोल. Hellas is going very high on the table. But yeah, sorry, Hellas है ना. I'm so sorry. Hellas. I'll put Hellas. मैं actually भूल गया. Hellas को Hellas for Genoa. चलो ठीक है. So Genoa goes Ideally तो मैं हेलास जेनोआ को रेलीगेट करवाता, बट बिकॉज़ सैम्पडोरिया, बट ठीक है. हाँ, but this is because of the Boca connection. But अजय भाई, अगर आप ट्रांसफर मार्केट पे क्विकली खोलो, if you just had to open, तूने हेलास को डाला है उधर, if you just had to open Hellas's transfer business, अजय भाई, if you could just quickly, because जब हमने मेगा प्रीव्यू एक किया था तब क्या घटिया स्क्वाड था, मतलब एट हैंड it felt like that was 20, it had 20th place written all over it. It had 20th, like एकदम blunt 20th था. अब ये लोग ने जाके क्या क्या साइन कर लिया, ऐसा लग रहा है भाई कि like what is happening, like if you just zoom in a bit, because it's not इनका जो ये सेंटर बैक है ना, फ्रेसेस भाई, ही सो रैश. मतलब ये बंदा का बॉल प्लेइंग, और अगर आप अग्रेसिवनेस देखोगे ये इतना रैश है, पक्का किसी मैच में रेड कार्ड ले रहा है. या बट तू अभी क्विकली इफ यू जस्ट गो, लोरेंजो मोंटिपो, वी नो इज अ सेरिबल, लाइक अजय भाई, सेरिया का काइंड ऑफ प्रोवन कीपर देयर. नेल्सन आई डोंट रेट, बट बेला कोचप ठीक प्लेयर है. उनाई नूनेज शिवम ठीक प्लेयर है, आई थिंक फॉर हेलास स्टैचर टू हेल्प देम काइंड ऑफ स्टे अप. Enjoy boss again, very Domagoj Bradaric, अजय भाई अगेन फॉर्मर Salernitana, अगेन ना वेरी हाउसहोल्ड नेम ऑफ सेरिया. अगर नीचे जाते रहो, अगर आप थोड़ा और if you see I think I was talking about Al Musrati, he's actually a pretty decent player. He's actually, I would be like, ये भाई ये तो mid table level player है. I don't know why he signed for Hellas Verona, but whatever. Yellow Santiago, obviously Shivam knows about him. Suzlov, again a household name. अगर आप और नीचे जाओ, गिफ्ट ऑर्बान साइन कर लिया, will he revive his career? So actually then yeah, exactly, your favorite Daniel Mosquera is also there, Shivam. So
इट्स लाइक एंड Sure. ऑब्वियसली वो जियो जो ना ये है या आई मीन ये इनका इतना जो खेलते हैं पेयर जो he plays very या well. yeah exactly so my point is like suddenly he became the player of the match on the first day so ये लोग ये हेल्लास की वो टिपिकल आदत है ना हम लोग कैसे भी करके कुछ भी करके पीसेस इकट्ठा करके सरवाइव करेंगे और यही लग रहा है एंड दैट इज व्हाई आई थिंक शिवम इज राइट टू प्लेस देम वेयर ही हैज प्लेस्ड देम दैट इज माय ओपिनियन क्या बोलते हैं शिवम तो ये स्क्वाड इतना जब आई थिंक आराम से सर्वाइवल लिखा है इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर गोल स्कोरिंग इशू ये अपना रिजॉल्व कर लिए ना तो आई थिंक बैक लाइन में इनके पास एक्सपीरियंस आ गया उनाई नूनियस एंड येलो सैंटियागो थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं ला एग्जैक्टली लीगा के तो हाँ I hope so they can translate that form in Serie A as well. And हम्म ugly wins 1-0 मतलब रैंडम लाजियो को ये लोग 2-0 हरा मतलब although अभी तो बहुत बुरा हारे हैं बट लाजियो को तो नहीं बोलना चाहिए बट कोई भी El एक रैंडम टीम El को El Fascisto. मतलब कोई भी एक रैंडम टीम के अगेंस्ट अभी आप देखिएगा ये 1-0 2-0 और अच्छी टीम के अगेंस्ट के निकाल लेंगे एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दे इवेंचुअली से मतलब ऐसा मुझे फीलिंग है कि 14 से जो 18th का स्पॉट है इस बार सेरिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा मतलब 3 to 5 पॉइंट का डिफरेंस होगा हम्म जिससे सारा टीम्स का वो प्रॉपर जो मैचेस है और जो गेम है उसी पे आएगा fair enough moving on You can move ahead. uh, Move ahead. yeah moving on we go to 10 to 13 guys obviously अगर आप just a brief note कि अगर आप हर टीम अगर आप सोचो हम लोग हर टीम को डाइसेक्ट करेंगे नहीं बिकॉज वी ऑलरेडी डन दैट इन द मेगा प्रीव्यू सो गो एंड वॉच दैट ऑब्वियसली ये थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है इन द सेंस की ट्रांसफर मार्केट क्लोज गया बट या शिवम टेक ओवर 10 to 13 क्या बोलते हाँ हैं 13th आई फाइनली कीप क्रेमोने से हाँ क्या because शिवम I शिवम told बोल बोल yeah बोल yeah नहीं नहीं बोल बोल because उसके बाद I don't know what they are doing. They're building one of the most random squads ever. Random. JB Vardy, you have to show it yeah Mussolini, yeah Sarmiento, Sanabria. I'm waiting for Baskirotto backheel to Mussolini with that cross and Vardy just heading it in. I just can't. I भाई just can't. अरे कौन सा तू मेरी राइट तो विंग सट्टा लेके आया है भाई. मेरी तो बस दो दो ख्वाहिश है एक जब लाजियो से गेम हो क्रेमोनेसे का तो वार्डी स्कोर करे एंड ही डज दैट ईगल वाला सेलिब्रेशन एंड जब Yeah. रोमा के अगेंस्ट हो तो वो ही डज दैट क्रूज वाला सेलिब्रेशन भाई exactly. Exactly. So Ajay bhai, just ऊपर just एक मिनट जा सकते हो फटाफट से. Emil Audero again. I'm not the biggest fan, but a decent keeper. और बैकअप भी देखो अजय भाई Silvestri again a very decent keeper. So keeping भी solid है. Shivam, you know Mikhail Faye obviously उसका career has not panned out as it should have, but he's still 21. इट्स अ गुड Baskirotto Ajay bhai, our muscle man, our Hulk, our resident Hulk. He's just classic. There is no stopping him basically. एंड अगर आप देखो नीचे जाते रहो अजय देयर सम डिसेंट ऑप्शंस इट्स नॉट जस्ट अबाउट द न्यू साइनिंग्स अगर आप मैं आपको चेक कर ही नहीं अगेन अ डिसेंट लेवल प्ले सेंटर बैक पेट्जेल अगेन अ डिसेंट हाउसहोल्ड नेम ऑफ सेरिया टेराचियानो एसी मिलान से लिए अच्छे परफॉर्मेंसेस डाल रहा है मुसोलिनी पे मैं बात नहीं Foreign करूंगा Bondo. वंडरफुल बॉन्डो वंडरफुल इज हाँ वैंडेपुट कहा गया या उस पे आते हैं बट बॉन्डो है वैंडेपुट या एग्जैक्टली राइट व्हाट अ प्लेयर लाइक अजय भाई लाइक वैंडेपुट मैं Yeah, बोल रहा हूँ yeah. आपको ही इज Vanderpool गोइंग टू is बी a, दैट अंडररेटेड वेटरन ऑफ दिस लीग yeah, आई एम yeah, टेलिंग यू लिख yeah. के ले लो अरे वेटरन मत कोलोमो बोल यार 29 साल का है यार 29 में वेटरन कहाँ हो गया यार. वो सेरिया की आदत पड़ गई है ना अभी मतलब अपने लिए मतलब वो क्या ही बोले अभी बट अगर देखो जर्बिन नॉट द ग्रेटेस्ट प्लेयर बट ठीक है यू नो ही इज डन एन ओके जॉब इन द सेरिया फ्रांको वास्केज हैज बीन इन दिस I लीग love फॉर एवर Franco Vasquez. I या love Franco शिवम Vasquez. आई एम श्योर शिवम आल्सो लाइक ये तो भाई मतलब ये सेरिया हाउसहोल्ड नेम ही है अभी फ्रांको वास्केज को तुम डालो वार्डी के साथ सार्मिएंटो आ गया है शिवम लाइक अगेन अ डिसेंट प्लेयर हु अगेन निकोला ये लोगों को ज्यादा पता नहीं है डाविड निकोला उसके लुक्स बाजू में रखो बट दैट गाय इज अ कल्ट हीरो लाइक हमने एक्चुअली मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं उसको बार बार इटालियन सैम एलरडाइज बोला तो बिकॉज इज बेटर देन सैम एलरडाइज He's better. विद He's ऑल ड्यू better. रिस्पेक्ट या एग्जैक्टली सो अपॉलजीज टू निकोला बट देखो इधर शिवम तेरा फेवरेट सनाब्रिया भी है ऑब्वियसली एंड जेमी वार्डी ऑब्वियसली सो अजय भाई लाइक सॉरी शिवम लाइक it feels random but it's good enough to survive यार if they don't survive it'll be crazy like क्या आई बोलते हैं थिंक बहुत अंडररेटेड है कि आप इनकी फ्रंट लाइन देखोगे ना तो बहुत पेसी प्लेयर्स है मतलब अगर आप एक तरफ वेटरन्स को देख रहे हो वार्डी फ्रांको वास्केज वगैरह है
वो जो उनको सपोर्ट देने के लिए अगर आप विंग्स पे देखोगे, मुसोलिनी हो गया या आपके सार्मिएंटो हो गए, लेट्स अगर डेनिस जॉनसन जब फिट हो जाएंगे वो हो गए, सो दीज आर ऑल वेरी रैपिड प्लेयर्स. तो दे हैव एडेड पेस एज वेल एज एक्सपीरियंस इन फ्रंट लाइन. एंड वांदे पुट्टे का तो आई थिंक सेरिया बी में असिस्ट का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब Yes, कुछ बहुत ही yes. क्रेजी नंबर है. एंड जर्बिन So ऑल्दो नॉट द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स, बट अगर आप लास्ट सीजन सेकेंड हाफ देखोगे वेनेजिया का, तो उसको जर्बिन वाज पुटिंग इन वेरी Yeah, गुड yeah, very परफॉर्मेंस. important. Very important for them. also Ajay bhai, just a crazy stat to what Shivam said. Basically अगर आप कोई भी कंट्री के टॉप 2 टियर्स लो और उसके गोल प्लस असिस्ट कंबाइन करो और टॉप 5 प्लेयर पकड़ो स्टैट के हिसाब से, तो वैंडे पूथ का नाम बेसिकली उसमें आता है. दैट्स व्हाई ही इज एक्चुअली अ वेरी decent level player. But moving on, going back to the tier maker, we just couldn't leave Cremonese out because rightly so they're the talk of the town. एंड भाई इधर कोई स्टोरी बन गई तो अच्छा है. बढ़िया. सॉरी शिवम, गो अहेड. तूने 13th डाला है क्रेमोनेजे को. हाँ, मैं लाजियो 12 डालता, बट थोड़ा सा अच्छे साइंस लास्ट मैच में दिख गए, बट इसलिए मैं जेनोवा डालूंगा. जेनोवा जेनोवा ही इज डालूंगा मैं नॉट 12 पुटिंग. पे. अजय भाई इज ऑलवेज रेडी. 11th पे आई गो विद टोरिनो. आई थिंक टोरिनो को मैं 11th पे डालूंगा. 10th कौन है? Also, 10th का तो टोरिनो का एनुअल 10th का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो 10th कौन है इस टाइम? आई गो विद फ्योरेंटियोली. आई गो विद फ्योरेंटीना 10th. फेयर इनफ. बोल्ड बोल्ड. इधर है हाँ वो रहा. Fiorentina is 10th. Interesting, interesting. We will move on from that 6 to 9 show. अभी थोड़ा क्रंच एंड की तरफ आ रहे हैं हम लोग. मिड टेबल से ऊपर हाँ, उठ के थोड़ा यूरोपियन बैटल, यूरोपियन स्पॉट्स. क्या बोलता है? या जस्ट वन क्विक रीजनिंग क्यों मैंने फ्लोरेंटिना का, मतलब बोल आई बोल. स्टिल कुडंट अंडरस्टैंड दिस टीम. मतलब मेरे को समझ में नहीं आया. आइडियली इनको टोरिनो वाला गेम हार जाना चाहिए था, बट उस हाँ. मैच में दहेया एंड इसराइल दे दोनों ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे दी. तो बेस तो बेसिकली उस मैच से ये लोग बच गए. लूका रानिeri आल्सो गेव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. तो आपको एक दो ऐसे परफॉर्मेंस दिख जाएंगे, बट दे फ्लोरेंटिनो मैच इजीली हार सकता था अगर वो या अगर डेविड दया नहीं होते. आई तो मेरे एग्री, को आई एग्री. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही. स्क्वाड में भी कुछ गोल्स, कुछ होल्स मिसिंग लग रहे हैं मेरे को. आई डोंट नो हाउ जेको ऑब्वियसली इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, बट एट दिस एज वो कैसा करेंगे. सो काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स है. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग देम ऑन 10th. फेयर इनफ. 9th में आई गो विद बोलोनिया. आई गो बोलोनिया 9th, बिकॉज आई बोलोनिया. थिंक यूरोपा लीग का थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इस बार उनको कॉट अप होगा. आई सी बोलोनिया डूइंग वेल इन यूरोपा लीग. मुझे लग रहा है कि रोमा और बोलोनिया दोनों ही अच्छा करेंगे इस बार सेरिया से यूरोपा लीग में, बिकॉज अगर आप यूरोपा लीग में इस बार का ओवरऑल कंपटीशन देखेंगे तो आई थिंक दीज टू टीम्स आर गुड इनफ की फाइट. एंड बोलोनिया ने अभी कुछ अच्छे अच्छे साइनिंग्स भी किए रिसेंटली. मैं अभी भूल रहा हूँ. आई थिंक दे गॉट इब्राहिम सुलेमाना फ्रॉम एटलांटा. तो इन्होंने डेप्थ अच्छी करी है, बट टू कॉम्पिटिशंस इंक्लूडिंग कोपा इटालिया को साथ में कैसे जगल करेंगे, या थोड़ा सा या डाउट है मुझे. या सो लेट्स सी. दैट्स समथिंग ऑन 9th. 8th आई गो विद लाजियो. लाजियो को मैं वाओ. 8th रखूंगा. अजय भाई is grudgingly putting Lazio so high up. आ ही बढ़िया. नहीं रहा है. हाँ, अभी आया. नहीं, बढ़िया. मतलब सारी है ना, तो थोड़ा सा मतलब आई बैक सारी. लास्ट या गेम्स में कुछ अच्छे मेरे को पैटर्न्स ऑफ प्ले भी दिखे थे. मैंने लाजियो का लास्ट गेम देखा था. आई थिंक रोवेला का, अगर रोवेला फिट रह गए तो डेफिनेटली दिस पोजीशन इज अचीवेबल. रेडा भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं. विंडोजी का ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस आ जाता है. सो आई थिंक दे स्टिक अराउंड, देन किसी तरह 8th 9th ऐसे करके निकाल लेंगे. आई एम जस्ट पुटिंग देम ऑन 8th बिकॉज ऑब्वियसली इनके पास मल्टीपल कॉम्पिटिशंस नहीं है खेलने के लिए इस सीजन. एंड जब विंटर मार्केट जब इनका ओपन होगा तो आई थिंक दे विल डू सम साइनिंग. सो इनका बैन जब अब खत्म होगा. अब तेरा 7 और 6 बता, बिकॉज दिस इज नाउ गेटिंग इंटरेस्टिंग. बिकॉज इधर कोमो भी है तेरे 7th आई लिस्ट गो में. एटलांटा. आई गो एटलांटा 7th. फिर अटलांटा 7th और 6th. Oh, now this is interesting, but 6th पे I'll go with Como. फेयर इनफ, फेयर इनफ. कोमो पे बहुत लोग ऑब्वियसली एक्साइटेड है. Obviously big mercato for them, and obviously a very clear cut plan. Let's see if the lack of experience in some areas affects them. But yeah, moving on, Shivam, 2 to 5, because this is your Europa League final Europa League spot and the Champions League wrapped up, plus
eventually tells us who your Scudetto preference is after this, or who do you think will win the Scudetto. So yeah. It's very tough now, but मैं ऊपर यही से स्टार्ट करता हूँ. ऊपर से मैं चल. स्टार्ट करूंगा. हाँ I'll go Napoli Scudetto winners. फिर से. ठीक है. Napoli, obviously, a lot of people have Napoli as the Scudetto winners. I'll go Roma as second. Wow, bold. Wow. Then I'll go Juventus as third. Hmm. Now is the interesting part. मतलब, okay, I'll go safe. I'll go Inter fourth. And yeah, how can I back against Allegri? I like actually Allegri, but I'll go Milan at fifth. Yeah. फेयर इनफ, फेयर इनफ. सो ये शिवम के प्रिडिक्शंस है, ये शिवम के फाइनल प्रिडिक्शंस है. अगर एक बार देख लो बराबर आप लोग, अगर आपने अजय, इफ यू वांट टू जूम इन अ बिट मोर, थोड़ा और, अगर आपने अगर आप जस्ट ट्यून इन करे हुए शिवम के प्रिडिक्शंस, हमने शिवम से चालू किया था. रेलिगेशन कैंडिडेट्स देख लो. क्वेस्टा की पार्मा, पिज़ा, जेलाडिनो की सॉरी, Como to finish high up, Napoli as champions, your top four to have Roma, Juve, Inter, and AC Milan in fifth. Shivam, एक question before we move over to further predictions. Who's the top scorer of the league for you? Who ends as the capo canonier? I'm confused, but if I'll have to go one name, then I'll go with Jonathan David. David, interesting. Again, bold shot because obviously नया आया है लीग में, but obviously he's in great form. और एक और क्वेश्चन बस ऐड करना चाहता हूँ, just a twist to this, flop of the season, and who do you think will be the like the MVP of the season? Not just, you can still say David, but yeah, that's up to you. MVP, यार नापोली अगर जीत रही है तो फिर से मैक्टोमिने. McTominay भाई is actually a good shout. I hope it's Yildiz. मैं उसकी Yildiz लाइफ शॉर्ट हो बोलूंगा. जाएगी. उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी भाई, मतलब 2 एमवीपी तो पक्का, फिर बैलेंड और भी कॉन्क्रीट शॉट हो जाएगा. बड़ा सॉरी, तू यिल्डिज बोल रहा है फॉर एमवीपी. हाँ, Yildiz है. Manu Kone is also a good shout. Matthias Sule, okay, I'll go with Matthias Sule. I am मटिया Wow. सुन. really Come on. excited for this Come guy. on. But या और फ्लॉप ऑफ द सीजन क्या बोलता है? फ्लॉप. flop of the season is interesting. मैं But जानबूझ के बोल रहा I'll go. हाँ, थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा इसमें. But if I'll have to pick one flop of the season, then I think it's gonna be यार मिलान. मुझे पता नहीं मतलब. क्यों कौन से सौ पे उतना ट्रस्ट नहीं है. मतलब हाँ, थोड़ा हाँ, सा यू कैन. इंडिसाइसिव लुक लगता है. चीको कौन से, सॉरी, इज दैट हु यू सेड? Yeah, yeah, Chico Conceição. So I चीको. don't know if it's a flop. मुझे It's इस a bold कैटेगरी में prediction. आप It's a prediction. It's a prediction. Don't worry. I asked you the question. You gave an answer. Don't worry about it. हाँ. जो है वो है. तो अभी. हाँ. मिलान का बेसिकली मुझे मेरा फिफ्थ पे रखने का दो रीजन है. आई एम एक्चुअली वेरी कंफ्यूज बिटवीन इंटर एंड एसी मिलान एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे स्वैप प्लेसेस. मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि इंटर का जो स्क्वाड है ना वो स्टिल अभी भी ना दे हैव दीस गाइस हैव प्लेड टुगेदर. तो उनको पता है केमिस्ट्री है. थोड़े से गेम्स वो लोग हारेंगे. एंड मुझे पर्सनली कीवो का फुटबॉल ठीक लगता है. बट आई थिंक अगर उसको साइनिंग नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं वो लोग स्ट्रगल करेंगे. अब वो स्ट्रगल चैंपियंस लीग में करें या लीग में करें, दैट इज टू बी सीन. तो इंटर विल स्ट्रगल. बट आई थिंक जस्ट बिकॉज की सिनर्जी और केमिस्ट्री है स्क्वाड में, आई थिंक दे विल स्क्रेप तो बोलना सही नहीं रहेगा, बट दे विल बी इन टॉप फोर. Regarding Milan, I think one game a week is very good for them, and I won't be surprised अगर वो लोग फोर्थ आ जाएंगे. It's just between this or that, तो इस वजह से मैंने रखा है. मैं यूवेंटस को थोड़ा नीचे रखता, but towards the end of the window जो उन्होंने कुछ ट्रांसफर्स किए ना, that has made me a bit Yeah. excited about Juventus. वरना I was not that high on Juventus अगर मैं थोड़ा सा ये डेडलाइन डे से पहले अगर मैं बात करूँ. तो आप these लोग भी are my आप लोग reasons. फेयर इनफ. आप लोग भी कमेंट्स में बोलो, डू यू एग्री विद शिवम्स टियर मेकर, व्हाट वुड यू स्वैप? आपकी इसको शायद 2 to 5 में नहीं रखोगे या फिर 6 to 9 में रखोगे, वो आप भी बताओ कमेंट्स में. आप भी कमेंट्स में बताओ एमवीपी, फ्लॉप, ये सब वो सब. बट अजय भाई, लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ अस. डू यू वांट टू गो नेक्स्ट और शुड आई गो नेक्स्ट? I'll go next. I'll go next. ठीक है, तो यू गो नेक्स्ट. अभी आपको मैं पूछता हूँ, आप करते रहो अरेंज बिकॉज यू आर शेयरिंग द स्क्रीन. सो Yes.
क्या बोल नीचे से चालू करेंगे. It doesn't make sense to start from top in my चलो opinion. ठीक है. Relegation से चालू करते हैं. Do you agree with what Shivam has done here, or would you make any changes and your reasoning मैं एक behind चीज that? करूंगा. I'll go with my pre-season prediction of Hmm. all Serie B teams staying up हाँ, and आपने Serie जैसे A बोला था. teams going Cagliari. to. Ooh. So Cagliari So 18th, Parma 19th, and I love you, I Yusuf Goodis. I I like the I exactly I like the fact that my propaganda against Di Francesco has worked so much that two of tonight's panelists have already put And him at plus, last place. plus they sold Christovich, man. And, Yeah, Kamada, Kurstovich. I mean, like, Milan को I भी don't. Kamada को कोई जगह नहीं मिला, एक्सपीरियंस को Hmm. लेने के लिए. उससे अच्छा Exactly. चैंपियंस में बेचते हैं उसको, या ला लीगा Exactly. में बेचते हैं. Yeah, Lecce Hmm. at 20th place, Parma 19th, Cagliari 20th. Yeah, so that's Ajay's Yeah, relegation picks. 14 to 17 क्या but, बोलोगे? ऐसे रखोगे कि थोड़ा इंटरचेंज हो रहा है आपका नहीं, I think laterally? Sassuolo थोड़ा ऊपर आएगा. I feel Ooh, ooh, Genoa will come थोड़ा सा नीचे. ooh, this is bold. Uh, Udinese also थोड़ा सा ऊपर. And actually Udinese are fair, but अभी because Zaniolo गया है, I think ये Zaniolo. थोड़ा Udinese ऊपर डाल के I just say बाप रे, Cremonese. बाप रे, बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए. बढ़िया, Yeah. बढ़िया. So Ajay bhai has Pisa in 17th, Hellas 16th, Genoa 15th, Cremonese 14th. Wow. Any thoughts? One thought I want to one thing I want to ask you, Ajay bhai, quickly, because I mean we can obviously move past the rankings very quickly, but I think there should be a point of discussion at least at some point in the bracket, right? I want to ask you about Pisa because उन्होंने थोड़ा bolster किया. They signed Raul Albiol, decent player. एक Atalanta से youngster उठाया Bonfanti. पर आपको लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली शिवम पुट देम इन रेलिगेशन विच आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मेरे को लगता है थोड़ी स्क्वाड वीक है बट क्या लगता है आपको आपको लगता है गुड इनफ टू सर्वाइव प्लेइंग टू कॉम्पिटिशंस. Just just about just about shall survive. That's what I feel. And I think that be down to Gilardino, the manager. या I think he या will he will बिकॉज keep them. या अगर if एंड they stick to them. and yeah, if they stick to him I think जब कुछ players can like if somebody has to bring something out of a player or a decent player, Gilardino is good at that. One reminder, Buffon ka beta, yes, Gianluigi Buffon ka beta plays for Pisa, Luis Buffon, but obviously it's not like he's a regular starter or anything. He has to work his way up, which there is a long way to go. But yeah, there is a decent team there, and I can understand where Ajay Bhai is coming from. Moving on, just let me show a couple of comments. Kabir is in the house. Nice to have you as always. Flop of the season. Wow, bold call. Kabir is going for Roma. Start strong, then they will hit a national bomb. Roma press will overreact. Gasp doesn't know how to deal with it. Fans will. But to be fair, these are some valid points क्योंकि रोमन This एटमोस्फेयर is में क्या होता है कभी भी कैसे लास्ट सीजन भी this is ये हाँ स्क्रिप्ट मैंने इतना बार पढ़ा देखा है. आई कांट टेल यू यार कबीर. एग्जैक्टली आई हैव सीन दिस. आई हैव लिव्ड दिस. एग्जैक्टली. हम्म. जैसे इसलिए आप बोलते हो कि ये उम्र में आपके बाल सफेद हो गए शायद इसलिए ही हुए. जैसे आपके शब्दों में. सो आई गेस कबीर हैज अ वेरी वैलिड रीजनिंग ओवर हियर एंड ही इज नॉट रॉन्ग बिकॉज रोम जैसे सिटी में कम्युनिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड yeah, that's fair. Good list overall. They agree with you. Hoyland could be flop. Hoyland flop. People hating on Milan. The honest prediction है भाई. Jashari Yeah, I'm not hating, man. yeah. Nkunku flop. Yeah, fair enough. Lakaka, I guess ये flop है. Lakaka बोल रहे हो तो flop ही पकड़ोगे आप. I would have Genoa 10 and Torino 11, 12 and Inter to finish 3 and UA 4. Otherwise, all the same. Fair enough. Yildiz MVP. I feel Vlahovic will still be UA top scorer. बाप रे. Thuram but कौन सा वाला? Kefren की. Marcus Thuram. In आजकल वो fact, हाँ? in fact, I'll say one thing. Milan could end their drought of Coppa Italia this year because I trust Allegri Cup competition. So if I have to back one team for Coppa Italia, then I might just say Milan. This is actually bold because नहीं जीत पाते वो लोग Coppa Italia. Fair enough, fair enough, So fair enough. yeah. वो लोग का कोपा इटालिया हिस्ट्री इज या नॉट दैट ग्रेट. रिव्यू थोड़ा ब्रीफली करेंगे हशीम. डोंट वरी रिलैक्स. अजय भाई यू कैन प्रोसीड. 10 to 13 क्या बोलते हो? इज दिस ऑर्डर द सेम और इज इट चेंजिंग? No, मैं थोड़ा चेंज करूंगा इस पे. आई विल जस्ट पुट टोरिनो because they've just not looked very so,
good so far. Long way to I go. will. I have a couple of things to say when I give my tier ranking because I have some. Ah, fair enough. But I feel that Torino will eventually No, no, recover. But I meant not on what you're doing. I meant on Torino in general. I have a couple of things to say fair. on Torino. But yeah. And I will just put Fiorentina a bit ahead and I'll put Wow, wow, that's high. That's high. yeah. No, Oof. इतना भी high Fiorentina नहीं, but I would go Lazio 10, uh, Udinese 11, Torino Ooh, 12. Udinese 11th. Wow, that's high. यार. But हाँ ठीक है. That's a good. देखते interesting prediction है. Yeah, and 13th Sassuolo. Yeah. May Sassuolo in just before. Cremonese. Yeah, before Sassuolo you proceed. Cremonese, Genoa, Voi, Hellas. हाँ. They will all just be very very close in my opinion. No, no, but this is why we do this. This is why we do this. I know the margins are very close, but this is why it's very interesting. For me, this 10 to 30 of picked is very, for me, it's a bit bold, but I am intrigued to see now how it pans out because Shivam, like Sassuolo and Udinese in the top, if between 10 to 13 is, that's quite the prediction, but let's see. 6 to 9, Ajay bhai, yes, Shivam ka tha. Do you agree with this? Any more? Obviously, you've made some changes already, but any more changes to this? इस पे मैं I will just put Bologna 6th, Como Ooh. 7th, Fiorentina 8, Atalanta 9. I want to come to you brief before again we proceed. Top 4 की तो बातें चलती रहती है. Atalanta के बारे में मुझे बताओ. First दो I think गेम क्या नो ड्रॉ. उसको बैक नहीं किया इवान यूरिच को उसको प्लेयर्स Yes. दिए नहीं उसको आई रियली Yes. फील कि उसको उसको वापस तीसरा जॉब उसको जहाँ पे उसको एक स्केपगोट जैसे उसको बना के रखने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे जिस तरीके से जा रहा है बट माय ओनली थिंग इज दैट दे विल बी आल्सो competing in the Champions League. So that is where I feel that there could be issues. I think जो उनका डिफेंस है सेंटर बैक्स स्पेशली थोड़ा वीक है Kolasinac injured है काफी समय के लिए Scalvini has just come back from a serious injury. Honest Anor, I don't know whether he'll be able to pick Learn up. needs, yeah, has a long way to go. Jim City. So I really feel that even in the midfield, Derun 34 now, how long can he continue, being clutch Ederson के साथ में in the middle of the park. So I just feel थोड़ा I know Yunus Musa को लेके आया but यार Yunus Musa तो खैर Milan fans को happily were letting him I'm go. I'm shocked यार. Like I understand वो physically शायद काम आ जाए, but यार Right. that IQ of that player is just not there यार. Like क्या ही मतलब. मैं इधर सोच रहा था ये लोग कोई क्वालिटी प्लेयर लाएंगे बट ये लाया यूनुस मूसा. लाइक आई एम सॉरी यार. मुझे तो मुझे तो लग रहा है कि वो सिर्फ बेलानोवा का बैकअप के लिए आया राइट विंग बैक पे. Yeah, they Because in because and what even in attack, yeah, I mean, my boy Maldini really missing a lot of guilt and chances. भाई Kamaldeen, Suleimana, excellent talent. Yet to see what he does. Skamaka, unfortunately, is injured again. Look, he mein got pata nahi injured kya again. See, this is what I was saying. Big blow, right? Big blow. He got injured today. Not today, but obviously the reports came out today. Saas Lukman जीतने को लागे, reinstate किया है. Lukman has been हाँ, reinstated in the Champions League squad and in the Serie A list. Your thoughts on very brief thoughts on that कि आपको लगता है वो optimal level के performances डाल पाएगा कि उसका मूड नहीं नहीं रहेगा. भाई तुम प्री सीजन तुमने पूरा मिस किया हुआ है ग्रुप ट्रेनिंग मिस किया हुआ है तुम्हारा दिमाग यहाँ पे था नहीं यू वांटेड टू मूव अवे फ्रॉम बर्गमो so I don't think so it's going to be like he's reinstated and he starts balling like what he was doing earlier. It's going to take time and even Ivan Juric is a very pragmatic coach where Gasperini का थोड़ा style अलग था. So all these players they were used to the Gasperini style for quite a while now, at least a couple of seasons, if not more. So I really feel that all these factors combined and the fatigue from playing in Europe 8 games at least, वो उनको थोड़ा लीग में उनको थोड़ा दिक्कत आएगा इसके कारण. Fair enough. We can move on to the rest of the tier maker if you will. So yeah, आपका 6 to 9 हो जाता है. आप अभी just let us know your obviously 2 to 5 and your Scudetto winners in one go. So चल मैं I will stick to my pre-season prediction of Inter winning the Scudetto. I feel that Inter, भाई ये तो अलग लेवल का बोल रहे, but fair enough. I think Juve will come second, Milan will come third,
Napoli fourth, Roma fifth. Oh, आपका contest hacking का prediction, so you have it, I guess, down in it's pinned in I'm your. sticking to that. I'm sticking to this. I feel कि it'll be like Inter, Juve, and Milan. Like it'll be a three horse race eventually. Hmm. Napoli अभी तो फिलहाल रहेगी in that title race for sure. But I'm just going to stick to my gut instinct and go with like eventually maybe a Spalletti coming back to Napoli or maybe a Thiago Motta taking up the Napoli job. Or you never know with De Wow. Laurentiis. He'll get Bazzari back also, for all you know. भाई वो तो अलग लेवल का ही हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो बट दीज आर अजय भाई प्रेडिक्शंस एक बार थोड़ा और जूम इन कर लो अजय भाई इफ यू कैन जूम इन अ बिट मोर दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्रेडिक्शन यार इतना इतना ये नहीं अजय भाई ट्राइंग टू रिवर्स जिंक्स रोमा फिफ्थ वुड बी वी सी Like थ्रू अजय मैं भाई तो बोल रहा हूँ भाई मेरा minimum Roma has to win the Europa League this year. If it's not this year, it's never going to be any other year. So at least by फेयर winning इनफ the Europa League, you come back to the Champions League. Fair enough. Guys, again, as I said, Ajay, just scroll through your tier maker. Na? One Super Inter, obviously, top four Yeah. may Roma miss out, his beloved Roma miss out. Como, Bologna to do well again, Lazio in 10th place. That should bring Ajay bhai some joy. Hellas survive. And end May, you have Parma relegated, just as Shivam had them for relegation, and same for Lecce. आप All लोग three भी comments में बताओ where. all three promoted sides to stay up and three current Serie A teams to go down. Yeah, that's his constant prediction. He said that from the start. आप लोग भी बताओ, do you agree with these predictions? Where would you, what would you replace? Now before yeah, I'll come to Ajay bhai. Ajay bhai, आपका flop of the season कौन होगा? Oh, I think it's See, going to flop, be I mean, it doesn't have to be a player. It can be a club. You can name any. You can name a manager. You can name player, or you can name a moment you feel. You can predict a moment as well to make it more interesting. I was going to It's go with Ciro Immobile for Bologna to flop, uh, but Bologna to do well regardless of that. But yeah. I feel in terms of the money and obligation and everything, I think Hoyland has got a lot of pressure on his shoulders Hmm. to now perform at Napoli. And वो Conte का तुझे पता है कि he is very temperamental and the way that he is. Noah Lang as well. मेरे को I have I mean like with Noah Lang, it can go only one of the two ways. Either he's a super hit or he's a super flop. Hmm. But knowing Conte and that flaring tensions once again, Noah Lang, I think वो थोड़ा issue आएगा in settling in. But yeah, I mean this is what I feel that it could happen. In terms of teams doing well, I think Juve have strengthened very well. I think Juve का जो I hope to see a Vlahovic revival because Vlahovic at Fiorentina wasn't as half bad as what he is right now, what he was last season for Juve. So I think there's a lot of optimism, rightly so with Juve. But मेरा जो Inter का prediction है, I will still not write Inter off only for the fact Shivam also mentioned that this team has got chemistry, right? I would just say that Inter are missing someone in that HRB position when HRB is not going to be there through injuries or age related technicalities or whatever. वो थोड़ा मेरे मुझे लग रहा है कि शायद दिक्कत आएगा in terms of depth. Otherwise, do not count Inter out. Like I don't know, a lot of people have written them off. उधर से लॉस ने कंपाउंड कर दिया सब कुछ, but do not write them off. हाँ वो reactionary इनफैक्ट takes. आई से कि बोल बोल. इनफैक्ट आई से कि यूरोप में इंटर विल डू वेल, मतलब जैसा लोग कह रहे हैं ना कि यूरोप में मतलब खत्म ही हो गया, मतलब इटली से इस बार क्या होगा बिकॉज कॉन्टे कुछ कर नहीं पाता है इंटर. आई लाइक व्हाट कीवू इज ट्राइंग टू डू. ही ट्राइज टू प्ले मोर वर्टिकल फुटबॉल, मोर हाई प्रेसिंग फुटबॉल with this squad of players जिनके पास केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. एंड आई एम अ बिग पियो एस्पोजिटो फैन. आई थिंक वो बहुत अच्छा करेगा ये सीजन. ही कुड ब्रेक आउट दिस सीजन अगर उसको चांसेस मिलेंगे. माय ओनली कंसर्न इज कि जब आप इतना भी हाई प्रेसिंग है, बट जब आप थोड़ा सा वर्टिकल फुटबॉल, थोड़ा सा प्रेसिंग मैकेनिज्म वाला जब आप फुटबॉल खिलाओगे तो आपको वो फटीग कैचअप कर जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन. और जो स्क्वाड का एज है, ऑल्दो इंटर ने कम करने का कोशिश किया है, बट जो सेंट्रल सेंटर बैक का जैसे हमने बात किया, तो वहां पे अभी भी इश्यूज चल रहे हैं. इफ टीटीपी कैन स्टेप अप या कोई और सेंटर बैक्स कैन स्टेप अप, देन डेफिनेटली इंटर विल डू वेल. सो आई हैव अ फीलिंग कि इंटर यूरोप में अभी भी अच्छा करेगी.
सेरिया में भी अच्छा करेंगे ऑब्वियसली, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फेल होंगे. सो दिस इज व्हाट माय फीलिंग. मतलब मैंने क्यों इंटर को थोड़ा नीचे रखा था. Fair enough. Fair enough. So these are sorry Ajay, we still have a couple of questions for you. Breakout star मुझे बोलो और MVP बोलो Serie A का. I think MVP is And going to be Capocano Lautaro. here. Sorry, Capocano here, of course. I think MVP will be Lautaro, and the Capo Cannoniere could be between one of Thuram, Marcus Thuram, Lautaro, or one of the Juve strikers. I feel it could Mm. be between them with regards to how I've placed each one on the table. I also feel that Rafael Leao will have a good Yeah, season yeah. with Allegri at the helm. And I feel that even so, Milan Juve also could interchange because Milan को भी one game a week है. Allegri has Mm. one Spalletti. I don't know why Mm. people disrespect him by calling him allergy and stuff like that. वो पता तो नहीं यार भाई बहुत मतलब respect होता है. Allegri I think is still a master tactician. So I feel कि ये जो title race है again will be like last season, fine margins. But I just feel that थोड़ा और there'll be some a little more competition towards the end. Like last year it was a two-horse race. I feel it's such a three-horse race भी हो सकता है between both the Milan clubs, Juve and eventually Napoli as well. It's not like Napoli are going to fall off badly. I just feel that there would be a phase where Conte and ADL might just not get along, but the squad is still good enough. Yeah, it can easily finish higher also, to be honest. But mm. yeah, so ये तो तेरा MVP and top scorer हो गया. Otherwise, I think also keep an eye for you know if he remains healthy, Evan Ferguson. I just feel that he's got that 15 goals in him. आ सकता है अगर वो फिट रहे. थोड़े लक्षण दिख रहे हैं कि he's getting back to his old groove. And Gasperini and like even Shivam mentioned Sole. Sole ka I don't know if goals will be a lot, but I think he'll be in the assists ka game. But I think Ferguson will start scoring, and he might bag a few goals against the likes of say like a Genoa or a Cagliari or a Parma for that matter. Mm. So keep an eye on Evan Ferguson to do well. And Como, I think we have spoken about Como a lot. There or thereabouts. Not expecting them to break into the top five, but they'll be close. आई हैव Fair अ enough. फीलिंग कि सूर्य का लुइस मोरियल टाइप सीजन हो सकता है. वो जो 1920 वाला मोरियल का सीजन है था, 14-15 असिस्ट एंड लाइक 8-9 गोल कंट्रीब्यूशन, पेनल्टी 4-5 पेनल्टीज वन किया. आई हैव अ Mm. गुड फीलिंग कि सूर्य का इस टाइप का सीजन आ सकता है. मतलब दिस इज माय Fair, प्रेडिक्शन. fair, fair. That could happen. It could Interesting. happen. Interesting. That's a lot. Mm. So I think just looking at a few comments, ये आपका मेरे इसमें मैं ये सब आंसर कर देता हूँ. It makes more sense because I saw a few Yeah. questions above as well. Should be able to answer that. So I think a lot of it obviously ज़्यादा changes मेरे इसमें तो नहीं होंगे, but so अगर मैं relegation से obviously bottom से चालू करूँगा. I have Lecce for relegation unfortunately. मुझे लेचे की स्क्वाड बहुत पसंद है. लाइक व्हाट दे डू इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट. पैंटालियो कॉर्विनो ज्यादा लोगों को पता नहीं है कौन है वो. मे बी वी माइट हैव टू मेक अ वीडियो ऑन हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स इन इटली. बट द प्रॉब्लम इज लेचे गलत कोचेस हायर करती है. डी फ्रांचेस्को इज द कोच एंड आई फील देर गोइंग डाउन unfortunately because of him, solely because of him, heavily because of him. Parma, मैं बता नहीं पा रहा हूँ should I keep them in relegation or not because कैसा हो गया है कि I agree with all the points you guys made. It's a very, and even I've said it, it's a very raw squad and the veteran signings feel very random. But once their key players come back from injury, Friga and Ondrejka, तब and if they hit the ground running, I look at it like they'll at least be competitive with the likes of Pisa, Cagliari. But still, I will go for Parma in 19th place. अभी मेरा इधर थोड़ा ट्विस्ट होता है बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज बिकॉज मुझे एक्चुअली कैलियरी का प्रोजेक्ट बहुत पसंद है. देर ट्राइंग टू गिव यंग इटालियंस अ चांस. उनका कोच भी उनका फॉर्मर लेजेंडरी प्लेयर है फाबियो पिज़ाकाने. दे उसने कोपा इटालिया प्रीमावेरा जीता कैलियरी के साथ एंड I like what they do and I feel that there's a decent team there. But अगर मैं आजू बाजू देखता हूँ ना शिवम, मैं देखता हूँ हेल्लास, मैं देखता हूँ जेनोआ, क्रेमोनेजे, उडिनेजे, सासोलो, all of them are slightly better prepared. But then I see Pisa
So I feel that 18th spot could be Pisa and Cagliari. With a bit of bias, I'll just because I like Pisa a bit more. I'll keep Pisa safe. But मुझे लग रहा है रियलिस्टिकली कि पिज्जा जाएगा नीचे कैलोरी के ओवर. I hope I'm wrong, but I think let's put तो pizza in डाल ना. relegation as because ठीक even है. I don't have any of the new sides getting relegated. So actually, forget it. Put Cagliari back there. Put Cagliari back there because I don't really want. I don't think तीनों में से जाएंगे. बट या इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज बिटवीन कैलोरी पिज्जा. इधर मेरा थोड़ा चेंज होना चालू हो जाता है. आई थिंक Sassuolo replaces Hellas there. I I'm just struggling to see. I don't like that squad building what they're doing. अगर आपने देखा उनके striking options are Andrea Pinamonti and Walid Shedira. Shedira is a Serie C level striker. Let me be honest with you. So that's a very bad signing. That cannot be your striker going into the season. I'm sorry. वो नापोली का भी फोर्थ चॉइस स्ट्राइकर था up until now. So relying, yeah, so that's a bad one. I think it's a decent squad, but I think they'll just settle in this season and next season they'll build on it. Um, 16th Pisa, sorry, 17th Sassuolo, 17th Pisa, 16th Sassuolo. मैं जेनोआ को नहीं पीछे खींचूंगा हेलास के. आई कांट बिलीव आई एम पुटिंग हेलास अबव. मेरा जेनोआ का सिंपल प्रॉब्लम है. इफ क्रिश इज इन द चैट, barely spent any money, no money to spend, and those striking options are atrocious. I know Ajay bhai, आपका favorite Lorenzo Colombo है, आपका your beloved Ajay bhai FC player, but I don't rate the kid, sorry. And I think वो थोड़ा निकोलास टैंचू पे ज्यादा ओवर रिलायंस है, वैलेंटीन कार्बोनी पे ओवर रिलायंस है. As Krish said in the chat, they put in a great performance against Juventus. Shivam, तूने वो गेम देखा था शायद, I think. Collectively they're good. This is the Genoa of all these years. Collectively बहुत अच्छी टीम है, but individual moments बहुत मुश्किल से आते हैं अटैक में. So yeah, 15th, I guess that's 15th, right? थोड़ा Yeah, सा Genoa. डिफेंस भी योहान वास्कस तो बहुत ज्यादा ओवर रिलायंट मेरे को दिखता है. Yeah, मतलब exactly. I agree. अब तो कैप्टन भी है बट स्टिल वेरी मच रिलायंस ऑन हिम Yeah, वास्कस. yeah. अभी अभी इधर हेलास और इसमें से एक को ऊपर मेरे को करना है. Hate to admit it, but I think actually forget it. Paolo Zanetti. I think Cremonese 13th, Hellas 14th. So Cremonese को आप ऊपर खींच दो. या क्रेमोनेजे गोज देयर. हेलास 14. हेलास अगेन मैंने जैसे बोला, आई डोंट लाइक द क्लब, बट उन्होंने थोड़ा अच्छा डिसेंट स्क्वाड बिल्डिंग किया है. kudos to them. Paolo Zanetti उस पे जूरी आउट है एज अ कोच. ही इज a household name but not the greatest coach out there, but let's see how these players settle. I think Hellas will be fine. Cremonese अजय भाई आप लोग ने एक्सप्लेन किया, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है. निकोला सर्वाइवल स्पेशलिस्ट, हिपस्टर टीम जैसे आपने बोला. आई रियली होप जेमी वार्डी स्कोर्स डबल फिगर गोल्स. मेरे को उतना देखना है, 10-11 गोल भी मार दे मेरे लिए काफी है कैसे भी करके. आई जस्ट वांट टू सी दैट. सो होपफुली ही डज इट. और मेरे को तो आई I want to see JB Vardy score against Lazio, like Shivam said, and blank against Roma. Yeah, that would be fine. Also for the people who missed it, Jamie Vardy has chosen the number 10. So this just becomes iconic now. मतलब double digit तो मैंने बन. बोला ना, ये शर्ट एक कलेक्टेबल होने वाला फ्यूचर में, मालूम है क्या? Yeah, and also just one more thing. मेरे को किसी ने पूछा था कि why were there violence in his intro video and everything. So basically Cremonese जो city से है, Cremona is where the violin was invented. So that's why the whole reference and everything. So yeah. टोरिनो, उडीनेजे. ओ भाई मैंने उडीनेजे को कुछ ज्यादा ही ऊपर रख दिया ऐसा लग रहा है मेरे को. बॉय एक्चुअली अजय भाई एक काम करो, जहाँ हेल्ला से उधर उडीनेजे डाल लो. मैं वो हेल्लास को ऊपर खींचते जा रहा हूँ अनकॉन्शियस मेरे सबकॉन्शियस में. Yeah, Hellas should be below Cremonese. I agree. So this is 17, 16, 15, 14, 13th Hellas, 12th Cremonese. बाप रे कुछ ज्यादा ही हाई कर दिया. Torino 11th ठीक है मेरे हिसाब से, because yeah, as long as Cairo is there, they're not going to succeed. And एक चीज बोलना चाहता हूँ अजय भाई, याद है मैं बोल रहा था टोरिनो का underrated market. I gave it a thought, and I was just reading about Torino fans का displeasure on social media. On an average, Torino fans have rated their mercato 3.5 to 4. That's how bad. And I understood, I read where they were coming from. The defense is absolutely dreadful. जैसे शिवम बोलता है, Maripan is the only decent defender there with Saul Coco, and the new signings are very raw. And Baroni ball, be prepared. It's not going to click away right this season because उसको signings नहीं मिले. Every signing, the pieces are not fully there yet. So it's not going to click mostly this season. Maybe next season if they don't sack him. Lazio 10th. I'm sorry. There's no mercato to speak of.
and I know Sari is a good coach. मैं शिवम से agree करता हूँ. Sari is that one coach who can squeeze, but as long as he has to stretch 6 months. Shivam, he has to stretch 6 months until then. And वो injury prone team है. तू जानता है that defense is very average. Patrick, Lazzari, Marusic, Usai. That's not a 20-25 defense. Romagnoli is also not great. So I just I just want to ask one question क्योंकि मुझे डाउट है. लाजियो कोई ट्रांसफर कर ही नहीं सकता कि रजिस्ट्रेशन का कोई इशू है? आई थिंक कोई ट्रांसफर नहीं कर ट्रांस सकता ना. ट्रांसफर कर भी ले तो रजिस्टर नहीं कर सकता. बट टेक्निकली इफ दे मेक अच्छा. द ट्रांसफर दे बी अंडर स्क्रूटिनी. बट ट्रांसफर सक्सेसफुल भी हो जाए तो रजिस्टर नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने 3 इंडेक्सेस ब्रीच किए बेसिकली. शिवम, उसमें से एक फाइनेंशियल इंडेक्स था और बेसिकली उनकी अकाउंटिंग एरर हो गई थी जहां उन्होंने अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के एक्सपेंसेस गलती से ट्रांसफर इसमें डाल दिया. और वो दैट्स टिपिकल लाजियो फॉर यू बेसिकली. And the funny thing is Lotito and the director were saying कि वो हमारी गलती थी, वो रूल्स गलत है. मतलब गलती तुम लोग ने की अकाउंटिंग, तुम लोग ब्लेम लीग को कर रहे हो. मतलब ये अलग ही रूल्स, मतलब 10-20 साल से सेट है अजय भाई, और ये लोग रूल्स को Yeah. ब्लेम कर रहे हैं. क्या ही नहीं, बोले. बट अगर दैट्स, रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होता ना तो मेरा एक थोड़ा सा बोल्ड प्रेडिक्शन था बोलना बोल कि बोल. लाजियो विल गेट ताकेहिरो टोमियासु. फ्री एजेंट है दैट, ना हाँ वो, हाँ हाँ हाँ, तो वो दैट्स फेयर. उसको ले आते हैं. मतलब ये मेरा Even दैट्स प्रेडिक्शन. Insigne is holding out for a move. आई थिंक अजय फेयर. भाई गॉट स्टक. फ्रीज हो I गया. think, yeah, Ajay Bhai got stuck. I thought I got stuck for a second. Sorry. It's Ajay Bhai, right? नहीं. Sure, who got stuck. So हाँ, yeah, अजय भाई. we'll come back to him. We'll come back to him. But Ajay Bhai is back. Sorry, Ajay Bhai, you were saying something. इंसिनिया फिर. Insigne के बारे में आप कुछ बोल. I think he's still stuck. We let him figure his stream out. तब तक मैं बोलता हूँ. Yeah, पर I'm शिवम, back. I'm back. अच्छा, Ajay Bhai is back. Sorry, Ajay Bhai is, yeah, हम्म. because comments भी बोल रहे हैं you're stuck. But yeah, मैं अजय back. भाई एक बार आप शॉर्ट, हाँ अच्छा, आप you're back. Okay. क्या बोल रहे थे आप इंसिने के बारे में? Sorry. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि Insigne is holding out for a move to Lazio to Yeah, reunite Lazio. with. Yes. Yes, because एक नहीं, sorry, actually didn't he end up that Parma deal? Did it happen or no? I don't think it happened, right? नहीं हुआ. Because नहीं हुआ, because नहीं exactly. वो. he still wants to go to Lazio and Sarri. Yeah. So basically the story behind वही था ना कि Parma was initially interested in him, then he waited for Lazio, then he was interested in Parma again, now he's waiting for Lazio because Shivam, there is a possibility कि September से वो लोग को free agents allow कर दे sign करने के लिए, at least free agent. So देखते हैं. But 9th place पे अजय भाई, this is tricky. Atalanta or Fiorentina? I'll go with Atalanta. Like, मैं दोनों क्लब से कन्विंस्ड नहीं हूँ, बट मैं एटालांटा के बारे में एक चीज बोलूंगा कि यूरिच की गलती नहीं है भाई. हर चीज पे यूरिच पे फिंगर्स पॉइंट करना बहुत कन्वीनियंट चीज होती है. मतलब यूरिच ये यूरिच वो, बट नहीं बैक किया उसको मार्केट पे. यूनुस But मूसा इज for a who नॉट. pays 16 million euro for Nicolas Zalewski, man? Like No, really? I agree. That's thank you, Atalanta. That's all I can say. But technically, us having not signed a defender, it's a poor sale as well if you really think about it, like in terms of squad, whatever it is. But I agree, 17 million, not great. Then ऊपर से अजय भाई, like midfielder में यूनुस मूसा लाना, स्कमाका को अब इंजरी हो गई है, कर्स्टोविच is your only striker. I mean, Lukman, will he be interested in playing the way he did in that stellar season? आपका राइट विंग बैक पोजीशन थिन है, मूसा पे आप डबल ड्यूटी पे रिलाई कर रहे हो. मार्को पलेस्ट्रा जैसा डिसेंट प्लेयर अपने कैलियरी को गिफ्ट कर दिया, लाइक अनबिलीवेबल. Belanova, keep an eye on Belanova. He is struggling as of now. So I'm intrigued to see what kind of a season he has. Ederson is out. We didn't touch upon this. Ederson, Shivam had surgery, so he's out for 1 month, just over a month. So that's a big miss. Charles de Ketelara is MIA, missing in action. गायब ही हो गया, मतलब कुछ खेल ही नहीं रहा है वो. Yeah, and Ajay bhai, Samardzic, will this guy step up finally? When will he step up? That front three is not ticking. Daniel Maldini, अब तो Scamacca इंजर हो गया. So that these lot of question marks. So that's why I have them in 9th. Fiorentina, Shivam, I know you have your doubts over Pioli and everything, but मुझे लग रहा है ना, as the season goes on ना, they'll figure themselves out. Because Ajay bhai, if you can just Fiorentina का squad अगर transfer market पे quickly दिखा दो, because I feel it's a squad worth showing actually. Because I really kind of liked how they picked up towards the end of the market. Just quickly, if we can show it.
हाँ, आई थिंक फ्योरेंटीना का जब मैंने अपना टीयर में दिखाया था तो आई हैव सम रिसेंसी बायस एज वेल, जो उनका लास्ट Hmm. गेम था, तो इट कुड Hmm. बी या Yeah, if we could just zoom in a bit, De Gea goal में De Gea is doing well. सॉरी कोमुजो इंजर्ड है बट अगेन अ डिसेंट टैलेंट वीटी साइन किया अगेन फिर से इटली आ गया वीटी अनदर गुड बैकअप ऑप्शन टू हैव तेरा एमान कॉस्मो भी है ऑब्वियसली शिवम बिग रिग्रेट फॉर बारसा ऑब्वियसली आई नो यू लाइक्ड हिम अ लॉट एंड पाब्लो मारी वेटरन देयर गोजिन्स है परीजी है डोडो है Oh, what a player. those are Gosens, I decent love Gosens, man. yeah What a player. Exactly, those are decent. Tariq Lamptey, I know he's a very injury-prone kid, but वो अगर potential थोड़ा percentage भी निकाले, that's a decent option to have. Midfield भी ठीक है, जब मैं देखो Fagioli, Fazzini, Nicolosi Caviglia, biggest signing for me. Bologna Yeah. wanted him badly, and this guy ended up signing for Fiorentina. Good physical player. Richardson was supposed to go to Hellas Verona. I don't think that happened, but Simon Som again, big signing there. Another mid-table baller, as they say. एंड उसके नीचे जाओ तो आपका गुडमंसन है और आपका केन और जेको है और ये भी है ना अपना आई थिंक या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट सो Piccoli again see Piccoli is there Piccoli is a decent option to have again 27 million they spent so it's a decent team so I feel yeah they are primed for 8th I feel they'll need time to figure themselves out it's a squad which you can say is on par with Bologna maybe but they need time to figure themselves out also because they'll be playing 3 competitions as well so yeah we can move back to the tier maker Como and Bologna very interesting I think this is how I'll keep it because Bologna is very seasoned I think they have a bit more maturity about themselves एक्चुअली यू नो स्वैप इट अजय भाई स्वैप इट कोमो को ऊपर डालो बोल्ड करता हूँ मैं भी थोड़ा I'll go bold because शिवम किसने बोला आप दोनों में से एक कि 3 कंपटीशन बोलोनिया के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए हैंडल मैंने करना बोला हाँ आई एग्री विथ यू थोड़ा बिकॉज ऑल्सो अजय भाई द वे दे बिल्ड द स्क्वाड राइट ऐसा हो गया है कि दे हैव नॉट बीन एबल टू रजिस्टर एवरीवन बोलोनिया Yeah. सो Yeah. दैट्स अ बिग बेंजामिन डोमिंगेस great talent, right? Shivam Roma wanted him until deadline day. They have not registered him in the Europa League squad, which means he has to play more in the Serie A. So, and Immobile is out for 2 months. So, there's they are a solid team. There, Ajay Bhai ने उस दिन अपने 5 takeaways में बोला, Shivam, it's a crazy stat. They've not lost at home since December 2024, and the last team to beat them was funnily Hellas Verona. So, मतलब ये अलग ही जोक है कि ऑफ ये कोर्स. हेलास वेरोना हाँ हेलास वेरोना ये जो ये सब अजीब चीजें करेंगी but yeah so Bologna I still think they'll do well but probably Como because 2 competitions and if they get knocked out of the Coppa Italia and if they just keep their heads level with all these signings I think they'll be good enough I think the crunch part is your top 4 and everything Scudetto अजय भाई Napoli डाल दो I think Napoli takes it not Inter Napoli for me I think just वो डेप्थ है ठीक है मेरे पे भी आई ऑल्सो हैव द सेम डाउट्स एज यू with Conte with regards to Conte but for now as where we are I think I'll put Napoli because it's a decent team now I have Inter at third yes मेरे को शायद मेजर चेंज करना पड़ेगा यूए एसी मिलान में जो मेरा था आई थिंक यूए स्टेज सेकंड या यूए का अटैक इज गेम चेंजिंग इफ इट क्लिक्स it really is David. Your Openda personally as a player I have many doubts because of his fitness issues and at times certain consistency problems because है उसके issues वो but I feel Tudor के अंदर with the partners he has he can click very well. Yield is a star talent. There is not much more to say about him. Chico Conceição, Shivam, I agree with you. He's a very selfish player. उसका end product वही problem है उसका. That's his undoing. Inter मैंने जैसे बोला बहुत क्वेश्चंस पूछे लोगों ने चैट पे कि वो इज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड ही विल गेट टेस्टेड उडिन लाइक टोरिनो को 5-0 पे जज करके फिर उडिनेजे पे जज करना 2 गेम इज नॉट इनफ टू जज आई एम सेइंग दिस सीजन बट दिस प्रोसेस विल नीड टाइम I know many people, many Interisti think that he'll get sacked by November, December. You never know. Let's see. But I feel it's going to be a bit of a rocky road, but good enough to finish third. Um, I think हमारे लिए अगर कोई stand out करेगा तो will be one of the new signings, either Peter Sucic or Pio Esposito. Big problem with Hakan doesn't look comfortable in this Kibu system. Kibu didn't get all the players he wants. So question marks बहुत है इसलिए third place and सॉरी अजय भाई बट मुझे लग रहा है अलेग्री फोर्थ निकालेगा Fair. अनफॉर्चुनेटली आई मीन अनफॉर्चुनेटली फॉर यू आई फील ही विल मैं टेक दैट मैं फोर्थ मैं खुद रोमा को फिफ्थ पे डाला हूँ तो हाँ या बिकॉज
मुझे वही लग रहा है कि उस दिन मैंने गैस्परिनी का इंटरव्यू देखा, सॉरी पढ़ा, और उसने वही बोला, सी ही वाज वेरी काम अबाउट इट फॉर अ चेंज, बट यू कुड सेंस दैट एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि हाँ भाई मेरी स्क्वाड कंप्लीट नहीं है अब तक, अभी जनवरी में जो होगा वो होगा, लेट्स सी, बट यूएफए, सॉरी यूएफए बोल रहा, सॉरी नहीं होगा बिकॉज नहीं होगा बिकॉज ऑडियो रोमा has, exactly, या एफएफपी है. FFP, and Roma have to sell again next when summer also they have to sell before 30th June and everything. So रोमा का वही है, वो जब तक वो यूएफए के इससे हटेंगे नहीं, थोड़े लिमिटेशंस रहेंगे. सो but I still feel you have a very good squad. So I'm not saying it's a wide gap between you and AC Milan in that fourth. I think you'll battle for fourth, and I feel ultimately because Allegri, he might have regressed as a coach, and even AC Milan is a work in progress. But वो Corto Muso mentality I feel will come through basically, and that's where he will they basically trump you guys. Now my flop of the season, I don't know. Like this is very tough, but I'll go for I don't know. Di Francesco को flop बोल के भी मतलब ही नहीं है. मतलब he is already flop. तो मतलब क्या ही बोलूं. But la see again, this is very easy to say. But flop of the season, I'll go for the club. I'll go for Lazio. I just feel it's a flop in the sense that how the hell can you make such a big accounting error कि आप इसके finances उधर कर दो and because of that your whole market gets blocked. So for me that's already a flop of the season. That's just called being dumb. That it's as simple as that. I think if it was me or Shivam or Ajay sitting in that accounts department, we wouldn't have made such an error. With all due respect, even if we are not great at finances, so whatever. I'm sure we are good at it, better than Fabiani, so whatever. But that's my flop of the season. Breakout star Ajay, I'll say I'll go bold and biased. I'll go Peter Sucic. I just really like the player a lot, and just he has that potential. MVP, this is tough, but Napoli, na. If Napoli wins the Scudetto, I have to go for a Napoli player. And yeah, I think I'll go for McTominay again. I think he's just too good right now. He's enjoying life in Naples. वो जो shot था in that first match day where he was just casually lying on the sidelines, Ajay bhai and ऐसे Shivam. Yeah, I think he's just yeah, aura. He's just enjoying life. He's in aura farming. He's just too good. And right now he's in a great place, and I think he'll retain that MVP spot. So yeah, those were my predictions. If quickly anybody wants to have a look, so we'll just quickly take some I'd say comments. even if Parma gets relegated, so दो players हैं. First is this Alessandro Sircati guy. I don't know अभी उसका आगे का सीजन कैसा जाएगा, बट हाँ. पहला गेम में तो उसने बहुत इम्प्रेस किया दैट ऑस्ट्रेलियन सेंटर बैक. एंड हम्म. मारियानो त्रोइलो. तो ये दो हम्म. सेंटर बैक्स पे कीप एन आई. मतलब दे कुड बी, मतलब Yeah, फ्यूचर Troilo. ट्रांसफर अगर अडेप्ट Yeah. कर पाते हैं ये लोग यहाँ पे. Hmm. बिकॉज ट्रोइलो इज बीइंग टाउटेड एज कि रोमेरो के बाद दे हैव गॉट द बेस्ट टैलेंट जो बर्गमो से आया है. Yeah. Yeah. So if this signing works, then they might just about survive. पीसा पे आ जाएंगे, but very difficult with Carlos Cuesta. ऐसा कुछ मैंने पहले ही बोला, मुझे उनके स्क्वाड जेलिंग पे इश्यूज हैं. अगर जेल कर गया उनका स्क्वाड तो वो लोग सरवाइव कर जाएंगे, बट क्वेस्टा पे मुझे ट्रस्ट नहीं है. क्या नहीं है, करेगा सेम कैसे करेगा वो, सेम. इस वजह से मैंने वो रखा है. तो yeah. ये लिख के ले लो भाई. क्वेस्टा अगर सैक हुआ ना जब है तो कोई टिपिकल सेरिया रेलेगेशन स्पेशलिस्ट आ जाएगा, याकिनी कैप नहीं पहन होना के आ चाहिए. जाएगा बचाने को. बट अजय भाई, ये एक मैं थोड़े कमेंट्स लेता हूं. आई थिंक इज फ्रोजन. आई डोंट नो बिकॉज आई कांट हियर, और I think Ajay is completely frozen. I think we'll come back to Ajay. But yeah, just quickly take some comments here, and then I have some one very interesting thing to ask you guys. Peter Sucic is very good. We don't need another striker. Kamak and Dick. Ajay, I think you're back now. Can you hear Yeah, us? yeah. Just quickly, Ajay, can you pull up the Serie A table, because I want to ask you guys something very shortly. So yeah. Uh, we don't need another striker. Skamaka and Kurstovic is enough. This is bold here, but Skamaka is injured, na Ritam. So it's a bold. See again, I think Atalanta are decent, but that Skamaka injury does it for me here. Shivam buys the best. Shivam, whenever you can return, let me know. Um, but still, I mean, even then, I know he's not out for long, but even then, how many injuries can a player take at once? That's where I'm coming from. Uh, Wait, what else other comments we Vardy with the Red Bull. वो मजा आएगा भाई. वो वही चाहिए मेरे को. Red Bull and Violin. He scores 9. Yeah, he scored 9 in the previous season. Fox in the UCL. Okay.
क्लब्स लाइक न्यूकासल हु आर नथिंग कंपेयर टू एसी मिलान, देख वो तो एक अलग ही डिस्कशन हो जाता है. बट सो गाइस, मैं ना अपन तीनों के क्विकली एक वोट, आई थिंक प्रीटी मच ऑल ऑफ अस हैव अ ग्रिप ऑन ऑल दीज क्लब्स का मर्कातो, किसने क्या किया बिजनेस. थोड़ा जूम इन अगर कर सकते हो टेबल पे क्विकली. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ओनली विल गो. नापोली, you guys just have to rate the mercato on 10, all of us. Okay, Napoli, rate, and comments where I want you guys to participate. Rate everyone's market on 10. Napoli, starting Napoli. 8. Sure. 7.5. I say 8.5. Again, comments पे आप लोग क्लब और रेटिंग देना. Juventus. 9. 7. Ajay bhai 9. Wow. Shivam 7. I say 7 as well. Defense. डिफेंस Yes. मुझे कम Yes. I agree with you. I say 7 as well. Cremonese, guys. 10. Yeah. 8. 8. Yeah, I agree with the 8. I saw a lot of Cremonese fans saying an 8, but it's a very solid market. Cremonese 8. Come on, guys. I want to see it in the comments. Club का नाम लिख के दो. Club का नाम लिख के दो. Roma. Ajay bhai, starting with you. I would give 7. मैं 6.5 देने वाला था, but 7 दे रहा हूँ क्योंकि we managed to hold on to Manu Kone and Evan Endika. So 7. 7. Shivam? I'll go 7. Yeah. Shivam will go 7. Roma, I go 7.5. लोग ratings देते जा रहे हैं. I'll pull those up. Next, Udinese. Very average apart from the Zaniolo Mercato. Is that even a mercato? Is that even a transfer, Zaniolo? That's not a Mercato, exactly. He even apart from that Buksa tha and that Piotrowski guy, sorry, Zolkovski guy, so I'll go 5.5. 6. I'll go 6. मैं तो 4.5 दूंगा उनको, only because of Zaniolo. मैंने 0.5 कट किया for Zaniolo. ठीक है. हाँ, आप लोग कमेंट्स में लाते रहो. इंटर, I'll go a very hard as of today 6. Not happy with the 3 players Even we I'll were go supposed 6. to. Even I'll go 6. Yes. Shivam? I'll go 5.5. I have doubts Fair. over Akanji as well. Yeah. Yeah, I have doubts. Actually, you know what? ये बहुत हार्श होगा. Actually, मैं 6 रखूंगा. मैं काटने वाला था 0.5 only because of the false promises made by the management. But that's not Kivu's fault or that's not the player's fault. So me making it 5.5 would be very harsh. I'll just stick to 6 and the 4 points. I can write an essay. A lot of false promises made, lot of big talk, lot of nonsense. Marotta is losing his brain cells. मुझे लग रहा है वो बुढ़ा हो रहा है. He should retire. So but yeah, moving on. Lazio, Ajay bhai. Lazio के मार्केट को रेट ही नहीं करते. 0. Minus. जैसे करीना कपूर बोलती है K3G में minus. माइनस मतलब उस दिन मैं इटालियन फुटबॉल, बाय द वे दिस इज इंस्पिरेशन फ्रॉम इटालियन फुटबॉल पॉडकास्ट. आई वांट टू गिव देम अ शाउट आउट हियर बिकॉज़ दे डिड दिस एंड इवन दे कुड नॉट रेट लाजियोस मार्केट. ये क्या ही रेट ही कैसे करो आप. आई थिंक द ओनली थिंग यू कैन रेट इज ब्रिंगिंग इन सारी, एंड उसमें एक पॉइंट आप काट लो कि उसको आपने झूठ बोला कि मार्केट चलेगा नहीं, तो उसका भी एक पॉइंट काट दो. आप तो 0 पे आ जाते हो आप. मतलब क्या ही. अरे इन लोग ने तो प्रीमावेरा का भी ट्रांसफर नहीं किया कि भाई एकेडमी में किसी दूसरे क्लब से लाके फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट कर सकते नहीं कर सकते ना. वो भी नहीं. द ओनली थिंग अच्छा प्रीमावेरा में. ओके. सॉरी. अच्छा मुझे लगा प्रीमावेरा का दूसरा अकाउंट्स होता है लाइक. नहीं देख, प्रीमावेरा में लोग ने किए, बट इट्स लाइक आई थिंक मोर ऑफ फ्री एजेंट्स एंड दे कुड ओनली मेक सेल्स, एंड सेल्स में उन्होंने इसको भेज दिया ना, चाउना को भेज दिया इसको. सो बर्नली को. सो आई मीन क्या ही बोले. मे बी 1 दे दे वो सेल के लिए, एक 1 दे दूं मैं 14. क्या ही मतलब. व्हाट कैन आई से. एसी मिलान गाइस, एसी मिलान. 9. 9. I'll go 8. I'll go 7.5. Como guys, Como, the talk of the town. Come on guys, comments लाते रहो. 8.5. 8.5. I'll go 7.5. I think they missed out on Davinson Sanchez जो इनका इनिशियल ऑप्शन था, एंड एक दो और लपोर्ट पे भी जा रहे थे, तो डिफेंस में स्टिल थोड़े से डाउट्स हैं मुझे. They still did. Yeah, they signed Stefan Posch and Diego Carlos, but yeah, I agree that's not the solution. I go 8.5. Yeah, also somewhere जो Cesc Fabregas का comment था, he does not really trust Italian youth. I'm sure all you guys must have seen it. That's a very interesting perspective. Maybe someday we can sit and discuss it. That's a whole episode. Bologna, Ajay bhai, because
it's a decent squad, but थोड़ा confusion लगा squad building 6.5. में. कितना? 6.5. Yeah, Sure. same, same. 6.5. I'll also go 6.5, 6.8 types because you can't be in a position where you have to leave players like Benjamin Dominguez out of the Europa League squad. I'm sorry, that's just weird squad planning. From what I read, थोड़ा मतलब not conflict but थोड़े differences of opinion थे Sartori और Italiano के बीच. So yeah. So let's see. Just quickly take some comments. Kabir, thanks for joining in. Please give your rating for Inter's market if you can before you go. Atalanta will finish 10th if they don't sack Juric. Bologna 7, AC Milan 8.9, Como 8, Phantom Thief भी 8 बोल रहा है, अनाज 7 बोल रहा है Como के लिए. AC Milan 6, they should have gone for better striker Santi, and Nkunku is May. Openda Lea would have been perfect. Oof, bold. लोटीटो आउट 0, लाजियो ओपन एंड शट केस. ओपन ही नहीं हुआ ना भाई, मतलब ओपन ही का हुआ. इंटर 5, इंटर 6, इंटर 7, अनाथ भी 7 बोला. सीबी एंड डिफेंसिव मिडफील्डर, आई एग्री विथ यू, 7. Udinese is 6. Roma would have been a 9 if Tyreek was signed. This is funny. This is funny. Cremonese million out of 10. Um, I think Cremonese को सब लोग Juventus -15. What the hell? Anad 6, Roma 8. We'll wrap up. We'll wrap up soon. We'll wrap up the stream soon. Uh, and guys, let's move on to the next 10. Let's rate the next 10 very quickly. क्या बोलते हो अजय भाई? Atalanta. 5.5. I'll go 5. I'll go 5.5. Fiorentina. 6. 6. क्या बोलते हैं शिव? I'll go 6.5. I'll go 6.2 or 6.3. Cagliari, very youth-oriented project. Just a But reminder. they also signed the GOAT. Yeah, Belotti उड़ा लिए लोग ने. Yes. Yes, sir. 6. 5. I'll go 6. I'll go 6 as well. Ajay went 5. Pisa, again, remembering the financial constraints and everything. I think, I don't know, 5.5, 6 is fair. Nothing more, nothing less. Same. I, Sorry. I'll go 5. Fair enough. Genoa, मतलब भाई लोन और फ्री ट्रांसफर के अलावा कुछ नहीं किया है. Sorry, 2. 2. Yeah. Oh shit, that's bad. Like that feel for 4. Okay. I'll go 4. I'll go 4.5 यार. मतलब मैं रुका हूँ, इनके FFP restrictions कब हटेंगे? Like whatever it is, I mean जो भी इनका ओनर कर रहा है. Parma, sorry, like apart from the Troilo signing, I'm going like 1.5 or 2. What do you guys say? Yeah. 2 as well for them. Fair enough. 3. Yeah, Lecce again, young players ज्यादा, but coach के लिए तो मैं काट रहा हूँ मार्क्स. मतलब 4 दूंगा मैं लेचे को. I'll go 2. Yeah, even I'll go 2, man. Hellas, grudgingly, I give them a solid 6. Yeah, even I'll give them like a 6.5. Yeah, I'll go 6. Yeah, Milan 10 for getting rid of Musa. Torino, guys, again false promises wala case. Cairo badi baतें. ठीक players lie, but they could not complete the defense at all. 5. I'll have to, 5. I'll give it a 4.5. 4.5. Yeah. I'll give it a 4. Sassuolo, okay market, I would say. Again, give them a 5.5 and be done with it. I feel like Shadira. I'll go 5. Yeah, like 5. Even 5.2. Yeah, I'll also go 5. I can't give 5.5, so it's too high. But yeah, that's one thing I wanted to do, guys. We can stop the screen share before we close. On a last note, we will close this stream in the next 10 minutes or so, Ajay bhai. Ek point of discussion, guys. Obviously, the Italian national team is back to playing. Azzurri, obviously, Ajay bhai. मैं स्क्वाड लिस्ट पूछता हूँ. Obviously, कल मैच है एस्टोनिया के अगेंस्ट. Just we won't get into too much depth, but क्या Shivam and Ajay bhai, just brief chatter, क्या लगता है Italy has to win these next 2 games? Like there's no two ways about it. Like come on, they can't mess this up. क्या बोलते मैं वही बोलता हूँ यार. There is a generation of kids who haven't watched Italy play in the World Cup, and my God, I never thought that day would come. But just quickly, जो मेरे thoughts, I feel that
अभी जो दिख रहा है, I mean, we will only see the results on the pitch soon, but at least training में there is that positive vibe that's going. There is a spirit that's back Gattuso के training session से. I hope it's more than just vibe and spirit. I hope that translates into results as well. So just hoping that ये 2 out of 2 wins आए, and it is not another heartbreaking journey for us Azuri fans, not counting you, Param, because you are a love blue fan. So during the international break, you are a honorary member on Calcio Churcha. Yeah. But Uh, yeah, I mean, while growing up in 2010 World Cup, I felt very good when Italy got knocked out actually, because the kind of stories those press media were making before the group, they were very overconfident. But I never thought कि they'll miss out on so many consecutive World Cups. So that grudge is gone. मतलब मेरा तो थोड़ा grudge था. And now I want Italy back in the World Cup, especially because it doesn't feel like यार मतलब 2006 का I watched that World Cup and फिर अभी इतना time हो गया. तो it is not right. And अजय भाई ने बहुत पहले, I think last year he predicted कि in 2026 World Cup, Italy and Paraguay will once again come back and meet in the same group. Same group. So I'll be backing उनकी वही पुराने वाले predictions से. And I think वो एड वापस आए 16 साल बाद फिर से वो वाला इवेंट देखने को मिले. उस टाइम आई थिंक डेरोसी स्कोर दैट सेकंड गोल, और पहला गोल अल्काराज ने मारा था व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर संडरलैंड. आई थिंक इस बार ऑल्दरेते खेल रहे थे, ऑल्दरेते मारे. एंड हु इज देयर इन रोमा फॉर इटली? आई डोंट थिंक Sir, मैंचीनी. तो sir, sir Brian Cristante. ओ माय गॉड, नहीं भाई फिर तो नहीं है. नहीं, so नहीं यार, I want Italy back यार, with in all due respect. मतलब if there are two teams from Europe जो which I like watching recently, it's obviously Spain and it's Italy, man. No England, no Germany. Germany तो definitely not. So yeah. fair enough. ये quickly यार ये squad दिखाना चाहता था मैं. This was the squad called up by Gattuso for this international break. Carnesecchi, Donnarumma, Merit, Vicario गोल में मतलब डी ग्रेगोरियो misses out again. Yeah, that's crazy. डिफेंस में आपका बास्टोनी, बेलानोवा, कालाफियोरी, काम्बियासो, डी लोरेंजो तो मतलब इटर्नल हो गया इस टीम में. डी मार्को, काटी, लेओनी, मंचिनी, obviously Mancini is some. back, by the way, after Yeah. several omissions by Spalletti. Gianluca Mancini is back. Yeah. Midfield में आपका obviously Tonali, Rovella, Locatelli, Fratesi, Fabian, Barella. Fabian, big question mark. Like I'm kind Yeah. of a bit shocked because it's not like he was a consistent starter for Bologna. So that's Yeah. bold, obviously. But then अगर हम forwards में भी फिर देखें, Zakanis, Kamaka, Retegui, Raspadori, Politano, then this again Daniel Maldini is a big question. Like again I'm not understanding like on what basis. Keane तो भी ठीक है, चलो लास्ट सीजन अच्छा गया. अब इधर एक पीओएस पॉजिटिव पे एक टॉकिंग पॉइंट है गाइस. ब्रीफ आपका ओपिनियन इस पे लेना चाहूंगा कि आई सॉ दिस डिस्कोर्स ऑन ट्विटर कि some people were saying अरे पीओ एस्पोजिटो इज ऑलरेडी वेरी टैलेंटेड, सेरिया बी में 20 प्लेयर यंग प्लेयर है, बहुत टैलेंट है, इटली के लैकिंग 9 है, इसलिए बुलाना चाहिए. अगर आपने पास्ट में अगर आप स्पेशली प्लेयर्स बुला रहे हो डैनियल माल्डिनी या फिर आपने पास्ट में ऑलरेडी वीकर प्लेयर्स को बुलाया, देयर इज अनदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज सेइंग कि भाई पीओ एस्पोजिटो ने अब तक ऑब्वियसली इंटर में उसका ऑब्वियसली ही विल गेट चांसेस, मतलब अब तक उसने सेरिया गेम्स खेले नहीं है, तो तुम किस बेसिस पे उसको कॉल अप दे रहे हो? अगर तुम सेरिया बी के लॉजिक से जा सकते हो तो यू कैन टेक एनी सेरिया बी का इटालियन टॉप स्कोरर एंड जस्ट पुट हिम इन द अजूरी टीम, whether it's a veteran or whether it's a youngster. So where do you guys stand on this? Like not just Pio Esposito but a player like him in that mold, not just Pio Esposito. That's why I even said the same for Fabian, because Fabian में potential है, but again he's not like a regular starter for Bologna week in week out. क्या बोलते हो आप लोग? Yeah, I think that this is just the media making a big deal of it. I think he's there to gain experience from the senior teammates, and it's good that he is included in this Azuri setup because there is one eye on the future. It's not like you are regressing and calling back like washed players. So ये तो बस क्या बोलते हैं, एक talking point narrative बना के रखा है. I think it's good that he's there in the squad setup right now. And even if he doesn't feature, he'll take back experience and go from it. Yeah, What do same you for think, me. Shiv? And Do you agree? Yeah. I might be biased just because I like this kid a lot. मतलब बहुत पसंद है मेरे को. मैंने जो गेम देखा था इस क्लब वर्ल्ड कप में रिवर के अगेंस्ट,
he's big, tall, old school type of guy who can Yeah. bang balls. मतलब his ball striking is very good. He's technical in spaces as well. And I was looking forward for this kind of forward जो इटली प्रोड्यूस करे. एंड मेरा एक इससे ये भी है कि आप बाकी ऑप्शंस देख लो. ठीक है, कीन का आप फिर भी मान सकते हैं, मतलब माल्डीनीज, ऑर्सोलिनी ठीक है, आपके ऑर्सोलिनी इज योर विंगर, पोलिटानो इज ठीक है, हॉट एंड कोल्ड. देन आप बाकी के अगर नाम देखोगे, सो ऐसा कोई बहुत स्टैंड आउट नेम नहीं है ना कि जिसने एकदम ही मतलब लाइक लॉटारो या हुलियान इन सब की तरह जैसे एकदम ही अपनी पोजीशन वो सिक्योर कर ली है. सो इट्स गुड कि आप अपने यंगस्टर्स को चांस दे रहे हो. यू की जैसा अजय भाई ने बोला, यू की वन आई ऑन द फ्यूचर. एंड डेफिनेटली अगर अच्छा करता है देन तो इट्स वेरी गुड ना, इटली को I फाइनली agree. अपना एक I स्ट्राइकर मिल जाएगा. I agree with you तो guys actually. I'm of the same opinion because लोग बहुत डिस्कोर्स चला जा रहे किस बेसिस पे इसको कॉल अप किया, किस बेसिस पे उसको कॉल अप किया. बट आई अग्री कि इटली में वही प्रॉब्लम है, आप कोई ना कोई रीजन निकलता है और फिर आप चांस देते नहीं, और वही हो जाता है कि आपका फिर टैलेंट वो वेस्ट हो जाता है. सो दिस इज द स्क्वाड yes. कॉल्ड अप. Obviously they are playing Estonia, and obviously but क्या आपको लगता है, just quickly because we are not going into too much of an in-depth preview right now, tactically वो discuss नहीं कर रहे because we don't have much time. We will do a proper review if time permits, so don't worry about that. But Ajay bhai and Shivam, quickly, do you think Italy wins both games, and how do you guys quickly see Gattuso setting up in this process? आपको क्या लगता है वो क्या करने वाला है, किस टाइप का 11, who I'm not asking you to name the entire 11, but some of the prominent players who do you think, or some unexpected names who you think will feature in the 11? आई थिंक मोर और लेस जो स्क्वाड रहेगा वो सेम रहेगा. द बेस फॉर्मेशन फॉर्मेशन तो मैं नहीं कहूंगा. द बेस विल बी सेम जो आपका स्पेलिटी यूज करते थे. थोड़े बहुत वो अपने फेवरेट्स रखेंगे जिस टाइप का उनको स्क्वाड खिलाना पसंद था. द काइंड ऑफ फुटबॉल विच ही प्लेड बोथ इन नापोली एंड बोथ इन मिलान. सो वो Yeah. ऑब्वियसली सेम रहेगा. एंड आई थिंक इटली विल आर विनिंग. एस्टोनिया से डेफिनेटली जीत रहे हैं, एंड अगेंस्ट गोटेड कंट्री तो उससे भी जीत ही जाएंगे. तो आई थिंक इटली आर विनिंग बोथ दीस गेम्स. Yeah, Yeah. what I was reading is that Gattuso is going with the back four. Yeah. He's been experimenting with the back four shape of 4-3-3 or 4-2-3-1, that kind of a thing. तो मेरे को लग रहा है कि आई थिंक यू विल सी, आई थिंक जो मिडफील्ड है ऑफ रोवेला, बारेला एंड टोनाली, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. आई थिंक दीज थ्री आर must starters in my opinion. I feel कि इन लोगों को start करना ही चाहिए. You could see Orsolini finally getting a chance. I feel Orsolini could be a surprise package in the Azzurri setup. I think वो आएगा. Otherwise, even in defense, I could see Gianluca Mancini starting at least in one game. Di Lorenzo will go back to right back in that back four, which is ideally good because I don't want him playing as a right center back in a back three, like मेरे को डर लगता है भाई. एंड वो स्पेलेटी के साथ में तो उसने क्या पता तो उसने अडॉप्ट कर लिया था डी लोरेंजो को. हर गेम उसको राइट सेंटर एंड आफ्टर सो मेनी मिस्टेक्स, राइट. सो आई थिंक द बैक फोर इज स्टिल द वे टू गो. if needed he can go a back three, but back three में I feel that you need Bastoni, Calafiori and a Mancini or a Gatti, not Di Lorenzo in my opinion. So yeah, I think घाटी को हाँ, मैं घाटी की जगह बॉनजोर्नो को लेता अगर उनका फिटनेस कंसर्न नहीं है. तो दिस वुड हैव बीन माय चेंज इन स्पॉट. थोड़े Yeah. और मिडफील्डर्स को मैं लेता. बट आई थिंक जैसा हमने नेपोली में देखा था ना कि ही प्लेज विद वन मिडफील्डर जो आपका फ्लोट करते रहता है, एंड देन यू हैव वन गुड बॉल पे मिडफील्डर जैसे फाबियन रुइज था, एंड यू हैव वन सपोर्टिंग का जैसे डिएगो डेमे हुआ करता था उससे. तो आई थिंक उस टाइप का थोड़ा सा सेटअप आप इटालियन नेशनल टीम में भी देख सकते हैं. विद टोनाली, Rovella was good on the ball. Tonali was, a machine type of midfielder, and you will have one supporting cast. Right. Agreed. Just a few comments before we wrap up. Do you guys agree? Like, don't have to give a reason, yes or no. Like, yeah, I think he should have been there. Also on Chiesa, yeah, obviously he got left out of Liverpool's Champions League squad. That's very bad, man. Yeah, I think his chances of going to World Cup is now बहुत slim. अगर आप UCL में नहीं खेल रहे हो, क्योंकि उधर तो आपको प्रीमियर लीग में साला को ही स्टार्ट मिलेगा, तो बहुत मुश्किल लग रहा है अभी Chiesa का. Exactly. Agreed. Like उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया इधर. Will top 2 qualify? नहीं, top 2 में सेकंड वाला प्लेऑफ्स में जाता है. So
Yeah, so that's a problem. That's a problem for Italy right now. Uh, Abhijay trying to protect his Arsenal player, of course. But yeah, I think PO will be successful here, but patience रखना चाहिए Mohammed. Like we have to have patience with the kid. Again, he's a very well built striker, but he's 19 at the end of the day. Italy will definitely reach playoff, and then they will fold like last two times. If this happens, man, नॉर्थ if this मैसेडोनिया. Oh my God. यार स्वीडन मुझे का तो नाइटमेयर और नॉर्थ मैसेडोनिया का नाइटमेयर, आई कैन मुझे नॉट तो सी. अभी भी नॉर्थ मैसेडोनिया में डोनारुमा की एरर लगी थी. भाई वो बंदा नहीं आ पाया नीचे. या क्या बोलूं. बट या ब्रॉडकास्टर का वही था कि जैसे अजय भाई ने भी कल बोला था, एक मीटिंग हुई थी, वी कांट टेल यू एनीथिंग मोर देन दैट. सो जस्ट होप कि कोई और मेरी मीटिंग कॉन्क्रीट नहीं अपडेट. हुई भाई, मैंने कुछ मीटिंग नहीं किया था, तो अजय भाई क्लैरिफाई ने कर लो. फोन अजय भाई ने डायरेक्टली लेगा को कॉल किया था, बट अब लेगा मीटिंग में को अजय भाई ने उसमें अजय भाई ने 80 सिग्नेचर गए थे, उसमें 70 सिग्नेचर मैंने किया था. और सिग्नेचर परम, डीजे, शिवम, योगेश, yeah. अभिजय, 10 सिग्नेचर इनके थे. But yeah, guys, like we will be doing another stream shortly. आज थोड़ा वो technical error and everything, and we also streamed after a while. So we will do a proper. We'll if time permits, we'll do a review of the Italy game and everything. आप लोग सेरिया पे ट्यून इन करते रहो, आप लोग देखते रहो. Any closing thoughts from you guys, Shivam and Ajay bhai, before we shut the stream? भाई कल कल मेरे चैनल में एक व्हाट इफ वीडियो आ रहा है अबाउट एंटोनियो कसानो, सो Hmm. do watch it. Nice. It will be scheduled soon. It is going to drop tomorrow. And it's very personal, that video, because that is the time when I started supporting Roma. Is the year Roma bought Casano from Bari, and Casano was touted to be the next Francesco Totti, like take over the legacy and carry on. So it is a very personal video. बहुत सारे memories जुड़े हैं Casano के साथ में. And if you've read Francesco Totti's autobiography, उसी में पता चलता है it's such a big what if. Like the kind of talent he had, it did not translate to any success. So when anyone says कि Neymar है, Hazard है, भाई, I think they still achieved a lot. And Neymar तो अभी भी है, like he's still playing. Hazard as well won trophies, but Casano, with the amount of talent he had, directly proportional to trophies or success he had, it doesn't match at all. So special video coming out soon, and Serie A broadcast के बारे में अभी we will let you know. जो भी update आता है हम लोग तुरंत आपको बताएंगे. And yeah, lastly, just to sign off, there is a fan ball meet happening in Mumbai, and we are part of that. So अगर आप मुंबई में हो तो you can come and meet us in one roof at the fan ball meet. तो उनका जो पेज है उसको फॉलो करो. They will put up the details of the date, venue, everything, and we will be there. Yeah, before Shivam, you give your thoughts. You can answer this as well. Is he starting? हाँ, सो मोन्यूमेंटल में गेम है तो ऑब्वियसली प्रेशर रहता है हमेशा रिवर की मीडिया से, सो उसको मिनट्स डेफिनेटली मिलेंगे, बट स्टार्ट विल बी अल्माडा, मेसी, हुलियन एंड निको पास. ये स्टार्टिंग फ्रंट फोर. Fair enough. Fair enough. Also, एक और चीज जो ऑब्वियसली मेसी हाँ. ऑब्वियसली बिकॉज लास्ट गेम है, ये तो मैं भूल ही गया. बढ़िया. या द फैन बॉल मीट थिंग अजय भाई ने जो मेंशन किया, ऑब्वियसली अगर आपने देखा होगा द फर्स्ट एडिशन हैपेंड विद ड्रॉगबा इन दिल्ली, and this time it's happening in Mumbai, and we will be one of the panelists or guests at least. So अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हो, and there'll be other creators or whatever there's going to be a lot of things. अभी इस चीज को टाइम है, it's not like it's happening next month or so, but टाइम है. कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा. So if you guys are interested in these kind of I guess get togethers or whatever, you guys can come in. आपको डिटेल मिलते रहेंगे हमसे, और फैन बॉल मीट को आप लोग सोशल मीडिया पे सर्च करके फॉलो कर सकते हो. एंड या all I will say is subscribe to Ajay Bhai's channel, follow Shivam on Twitter, because as you know he talks about South American football the most, and I'm sure he'll be watching the games in the morning. So yeah, and do please like, share and subscribe the stream and to the channel. Thanks to you guys, हमने 2K subscribers finally surpass कर लिए. So now let's move strong to 3K, and there's more to come. So yeah, thank you to everyone for tuning in. Thank you to Shivam, Ajay bhai. Also, Ciao, दोस्तों, ciao. good We'll night, see you soon. शुभ रात्रि. बाय.